Now our next topic is circle graph or pie chart. Now what is the meaning of pie chart? The data which is represented by dividing a circle into sectors is known a pie chart. Look here. The data is represented by dividing the circle, right? जो यहाँ ये सर्कल में फॉर एग्जांपल ये डेटा दिया है, राइट इसमें किसमें सेक्टर में डिवाइड है, राइट ये 10%, 5%, 20%, 15%, 10%, 25%, जो पूरा सर्कल है उसका क्या बनाया है, सेक्टर्स बनाया है, सेक्टर में डिवाइड किया है, और इसको क्या बोलते हैं, पाई चार्ट. दिस पाई ग्राफ आर सर्कुलर, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सर्कल ग्राफ. ये सर्कल में बना इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, पाई ग्राफ को सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं. और सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन होल एंड पार्ट्स. मीन्स ये किसके बीच का रिलेशन है, सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट, जो उसमें डेटा दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये पूरे होल के बीच में और सेक्टर के बीच का रिलेशन है. नाउ हाउ टू ड्रॉ अ पाई ग्राफ, राइट. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन डेटा. मीन्स जो सर्कल में डेटा दिया होगा उसकी पहले क्या फाइंड करनी है, हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. उसके बाद कैलकुलेट द एंगल फॉर ईच सेक्टर. उसके बाद हर एंगल के जो दिए ईच एंगल का, ईच डेटा का हमको, ईच सेक्टर का हमको क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है. और ये एंगल हम फाइंड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल. नाउ हाउ टू फाइंड सेंट्रल एंगल. लुक हियर, फॉर एग्जांपल इन योर टेक्स्ट बुक इज गिवन table 5.5. here in table in question is only given flavors and students in percent preferring the flavors given in question, right. Flavors are given chocolate, vanilla and other flavor. This is ice cream flavors, right. Chocolate flavor, how many students preferring 50%. Vanilla flavor preferring 25% and other flavor also 25%. These two column is given only in the question. Now here percentage is given, right. So we have to convert in a fraction. So percentage symbol when we are removing, then what we are writing, divide by 100. 50 upon 100, right. So 50 upon 100 is equal to 1 upon 2. Now look here, 25% means if I want to remove percentage, then 25 upon 100. So 25 upon 100 is equal to 1 upon 4. Again 25%, 25 upon 100 means 1 upon 4. Now we have to here 1 upon 2, here 1 upon 4, here 1 upon 4. That I have to multiply by 360, because in pie chart होल सर्कल्स सम क्या होगा, 360. ये पूरा सर्कल क्या है, 360 डिग्री होगा. हाफ सर्कल क्या होगा, 180, राइट. सो हाउ टू फाइंड, वी हैव टू सेंट्रल एंगल. सो 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 360. यहाँ परसेंटेज दिया था, राइट. तो हमने परसेंटेज रिमूव करने के लिए डिवाइड 100 किया, तो डिवाइड 100 किया तो 1 अपॉन 2 मिला. सो 1 अपॉन 2 को 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 18 सो 180. तो 180 मिला. 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 360, 4 9 36, सो इट विल बी 90 डिग्री. अगेन 4 ऑफ 360 मीन्स 1 upon 4 multiply 360, 4 9 36, so again 90 degree, right. This way we have to find, but every time percentage are not given. When percentage are not given, that time how to find central angle. Look here, one example is here. The main source of energy used by each house in a street is listed below. Electricity means जो source of energy है हाउस में, हर एक हाउस में यूज़ होता है स्ट्रीट के अंदर, तो एस बिलो दिया है. इलेक्ट्रिसिटी
20 यूज़ होती है, solar 10, gas 12, oil 6, right? Look here, in here data percentage is not given, right? That time what we have to do? We have to do total of this 20 plus 10 plus 12 plus 6, right? When percentage is given, that time you have to divide 100 multiply 360, but here percentage is not given, so it is called frequency. We have to total it. Total frequency is equal to 20 plus 10 plus 12 plus 6 is equal to 48, right? Now we have to use each source, means 20 upon 48 multiply 360 we have to do. In percentage what we are doing? If 20% is there, the 20 upon 100 multiply 360, but here percentage is not given, so we have to total all the data that we can tell frequency. Total frequency is equal to 20, 10, 12 plus 6 is equal to 48, means we have to take 20 upon 48 multiply 360 to find central angle, then 10 upon 48 multiply 360, then 12 upon 48 multiply 360, then 6 upon 48 multiply 360. Now look here, this way we have to find central angle. Here we get 150, 75, here 90 degree and 45. Now look here, how to draw a pie chart, circular graph. Look here, for first example, first of all we have to draw circle of any convenient radius. पहले हमको कोई भी रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है. उसके बाद ड्रॉ सेक्टर्स द कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रल एंगल. उसके बाद हमको जो सेक्टर दिया है कॉरस्पॉन्डिंग जो सेक्टर से उसके सेंट्रल एंगल ड्रॉ करना है. उसके बाद जो वेरिएबल है कॉरस्पॉन्डिंग उसके वो एंगल लिखना है सेक्टर के अंदर. लुक हियर, फॉर वी आर टेकिंग दिस टेबल 5.5. हाउ टू ड्रॉ दिस ग्राफ, पाई ग्राफ. 180 degree, first we have to find central angle, then we have to take this 180, 90 and 90 degree in the circle. First convenient radius of circle we have drawn here, right? Now this is the center point you get when you draw with compass, right? You have to draw circle with the help of compass. This is the main point, middle point. Now we have to take any radius from central point, so I will draw radius. Now look here, first is given 180 degree, then next is given 90 and 90. How to draw 180? Look here, with the help of protractor. Now take this, put here in the middle. Now take here 90 in middle, right? It is here. First is given 180, so first of all we will draw 180. So 180 will straight line, whole circle 360, so it half 180 plus 180, it will be 360. So 180 will be circular, so it will be here 180, right? We have to extend the line, so this is 180 degree, right? Now 180 degree is chocolate flavor, right? Now again 90 and again 90, so put your protractor here and take again 90 here. Check in middle, it will become right 90 degree. Now draw straight line. So ये 90 degree, ये 90 degree. Now 180 degree chocolate flavor. Now 90% vanilla flavor. Now other flavors 90 degree, right? Now we will go for next this graph, right? This example 2, 150 degree, 75, 90 and 45. What is the easy for you? First 90 degree, it is a
straight line. So we will draw first 90 degree. You can draw any angle, right? First draw with the help of compass. Draw any radius, take any radius and draw the circle. Now draw any radius. This is the center point, right? Now I will take 90 degree. It will be easy for you. So I will take first here 90 degree, right in middle 90. So draw this way 90 degree. 90 degree for gas source. 90 degree for gas source. Now next is given, look here, 90 degree we have drawn first. Then we will draw 45 or 70, any angle you can draw. So we will take first 45. Look here how to take. Put your protector in this way and take 45. Look here, this 40 and 50, 40 और 50 का बीच का लो, या 40 और 50 का बीच का. This is 45. 45 degree for oil. Now next is 75 for solar. Now again put your protector in this way and match the line of middle. Now 75 degree. Now look here, this is 70 and 70 or 80 के बीच का 75, right? This is 75. For solar source. This is for solar. Now only 150 degree remain. So बाकी का जो पार्ट बचा वो कितना होगा? 150 डिग्री होगा, राइट? ये 150. होल एंगल, होल सर्कल कितने डिग्री? 360. 90, 45, 75 एंड 150. जो बाकी बचा वो 150 अपने आप हो गया. So we do not need to draw electricity, right? Now this way you have to draw pie graph.